Hello friends, so now we are going to start the chapter number 6, Work, Energy and Power. Here basically you have to understand the meaning of work. If you think about work means something doing, or you can say that if we are doing some work, it means if we are applying a force, if that displacement will take place, we can say that something that work has to be done by the body and work to be done on the body. Suppose if you think about that physical work, it means if somebody utilizing his energy to doing that displacement, exerting a force. In a simple term, suppose if you want to displace a table, so there you have to exert your force. It means something work will be taking place. But in a physics, work definition is a little bit different. In a physics, you can say that work is taking place where there is a displacement is taking place. And if you exert the force, if force is 0, work is 0. If displacement is 0, also is considered work is 0. So here you can say that if a watchman just performing his duty and just standing on that near to door, so as per physics, his work is 0 because no displacement. So displacement 0, so work is also 0. Suppose if you think about software engineer, okay, any clerk, just a person who is work related to that we call as a table work, वो बैठे बैठे काम करने वाला है. So in that case there is not any kind of a physical displacement. So physical work is 0. In some other sense you can also say that that's a mental work. तो यहाँ पे वर्क को देखने के लिए बहुत सिंपल सी बात पता होनी चाहिए. That's a simple thing. That's a work means force as well as displacement when take place. Energy. So it means energy here. There are lots of different types of energy. Kinetic energy, potential energy, heat energy, mechanical energy, okay, electrical energy, magnetic energy. There are lots of different types of energy. But it shows that one form of energy always convert into another form of energy. And last one, that's the power. That's the time rate of change of work. That is known as a power. So here, just start this chapter with work and work done by a constant force. Suppose if you want to displace a body or an object from one place to other place, तो क्या होगा? So you are exerting a force with a small fraction. अगर आप थोड़ा work देते जाएंगे, थोड़ा displace करवाते जाएंगे, so finally you can say that yes, body that will displace from the one place to another place. Here they mention that work is said to be done only if some displacement, so here this point is important, some displacement is take place in the direction of a force or component of displacement. तो अब अपने third, fourth, fifth, basically fourth and fifth ने आपने देखा हुआ है vector के बारे में, that's a component. So here that now mention it. Not only displacement in the direction of force, but also that component of displacement as well as component of force भी आप यहाँ पे ले सकते हो. Here we have a very simple figure. Suppose here we have a one body that will displace. So here this body that exert the force in this direction, force यहाँ पे लग रहा है, and due to this force, the displacement from this one point to another point that will take place. तो मान लो कि बॉडी यहाँ A से B तक डिस्प्लेस्ड हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं. So here it shows that product of magnitude of force and displacement during which the force acts is called a work. तो यहाँ पे आप बहुत एक सिंपल सी बात समझ सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल यहां से बॉडी यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विल टेक प्लेस. As a change in velocity will take place, and there is also effect on that change in the magnitude of displacement. तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो, change in velocity v square minus v naught square, that is 2ad,
ड्यू टू दिस डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, ड्यू टू दिस डिस्प्लेसमेंट वी कैन से दैट चेंज इन वेलोसिटी टेक प्लेस, या तो ऐसा कहेंगे ड्यू टू दिस चेंज इन वेलोसिटी this displacement will take place. I think that is much better. Here you can also say that if you exert the force and some kind of displacement will take place, that is F is equals to ma. In a simple terms, that's the product magnitude of force and the displacement. So from this one you can say that W is equals to force into displacement, that is a simple work done. Here you can also say that that's work done, that's F into D. It is a product of two vectors. In the normal terms, I can also say that unit of work done, that is a joule, and as per this force into displacement, you can also say that Newton into meter. Ultimately Newton into meter हो या joule हो, मतलब एक ही होता है. If you have a unit, you can think about dimensional formula. So whenever you want to think about dimensional formula, always go with the basics, ताकि आपको उसको कभी लर्न करने की जरूरत ना पड़े. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है. फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट. सो नाउ इफ यू जस्ट थिंक अबाउट सिंपल यूनिट्स, मास kg, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डिस्प्लेसमेंट दैट्स अ मीटर. तो फाइनली ये बन गया kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर. तो यहां से हमें डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा m1 l2 t minus 2. Here there is a joule, you can say that. So 1 joule means what? You can say that to displace a body by 1 meter distance, if we apply 1 Newton force, that work done is known as 1 joule. तो मैंने यहां पे आपको 1 joule का डेफिनेशन बता दिया कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्टेंस, ये तो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करवाना हो, तो उसके लिए अगर हम 1 न्यूटन फोर्स का यूज करते हैं, तो उसको हम 1 जूल वर्क हुआ ऐसा हम कह सकते हैं. इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? चलो, नाउ हियर दे आल्सो मेंशन द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट. अब ये दो बातों को समझना बहुत जरूरी है. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू फोर्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी डी आ गया, ड्यू टू द फोर्स यानी एफ आ गया, एफ इंटू डी, या सिंपल सी बात हो गई. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट. तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक ऐसा फिगर जो अभी लिया था उसके जैसा ही फिगर हम यहाँ पे ले सकते हैं. Here this is actually displacement D, यहां से यहां तक. Now component of force. Suppose if I exert the force in this direction with respect to horizontal line, suppose that makes a theta angle here. So that F resolve in a two component. Suppose if I take that F component here in the direction of a displacement, so this one I can consider as a F cos theta, and this F cos theta multiply by this displacement D, तो भी आप उसको वर्क कह सकते हो. एक और चीज आप यहां पे ऐसा ही फिगर लेकर समझ सकते हैं. दिस गिव अस W is equals to force into displacement F dot D. When there is a dot product you can use as a cos theta. वो हमने लास्ट सेशन में या तो लास्ट चैप्टर्स में देखा हुआ है कि if there is a dot product there is a cos theta, that is a W is equals to F D cos theta, ऐसा हम कह सकते हैं. पर F D cos theta का यहां पे मतलब है W is equals to magnitude of displacement, जब यहां पे बताया magnitude of displacement and component of force, यानी component of force बनता है F cos theta, and that F cos theta in the direction of a displacement. तो इसका एक और मतलब भी हम निकाल सकते हैं. W इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट यानी F D cos थीटा. इसके लिए भी इसी के जैसा फिगर आप देख सकते हैं, समथिंग लाइक दिस. सो हियर यू कैन से दैट यहां से यहां तक का जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, यहां पे उसने बनाया थीटा है. ओके, तो ये जो D है यहां पे हमने फोर्स लगाया हुआ है, तो ये जो D वेक्टर है उसने यहां पे
कंपोनेंट लिया, मतलब अब ये समझना है D मेक्स एंगल थीटा विथ F, तो D का ये कंपोनेंट, ये वेक्टर D है, उसका एक कंपोनेंट यहां पे बनेगा और वो होगा D cos थीटा। आई कुछ बात समझ में? So in the same direction, here you have that magnitude of force and component of displacement, that is that W is equals to FD cos theta. From this I can say that first point, if W is equals to FD cos theta, I can say that if theta 0, it means what? When there is a displacement in the direction of a force, अगर एंगल 0 हो रहा है, हम यहाँ पे फोर्स स्लांट दे रहे थे, तो आप यहां से एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो। आपने देखा होगा ट्रैवलिंग बैग, ट्रॉली जिसको हम कहते हैं, ओके, ट्रॉली के नीचे व्हील्स होते हैं, तो सब लोग उसको कैसे कैरी करके ले जाते हैं? तो दे एक्सर्ट द फोर्स, दे जस्ट पुल, ओके, उसको लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, वहां पे व्हील दिए गए हैं, इफ यू जस्ट पुल अ लिटिल बिट एंड इफ यू मेक इट अ स्लांट, तो अगर आपने उसको खींचा है तो वो ट्रॉली अपने आप मीन्स अच्छी तरह से वो चलेगा, आपको ज्यादा उसका वेट उठाने की जरूरत नहीं है। मीन्स डिस्प्लेसमेंट आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वही डायरेक्शन में हो रहा है। आपने फोर्स दिया पर टोटल फोर्स नहीं दिया, आपने सिर्फ दिया फोर्स का कंपोनेंट, वो बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए। But suppose if you push object and if that will displace in the same direction, मतलब वहां पे फोर्स का भी मैग्नीट्यूड आया और डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड आया। So when theta 0, you can say that W is equals to FD only, force into displacement in a simple terms. Now here in a second point it also mentioned if theta 0, अगर थीटा 0 होगा तो W is equals to FD cos 90, cos 90, थीटा 90, थीटा 0 तो देख लिया अभी। W is equals to FD cos 90 and as you know it cos 90, if force and displacement perpendicular to each other then work done is 0. इसका एग्जाम्पल, तो क्या फॉर एग्जाम्पल अगर कुली ने लगेज अपने सिर पे उठाया हुआ है, तो ये एक्सर्ट द फोर्स इन अपर डायरेक्शन but displacement in horizontal direction, मतलब force in vertical direction, displacement in horizontal direction. So in that case physics ऐसा कहता है कि उसने कोई physical work किया नहीं है। समझ में आई कुछ बात? Suppose if you lift object and when you just start walking, तो आपने जो lift किया in upper direction, अब आप चल रहे हो horizontal direction में, in that case also work done is 0. तो ये समझने वाली बात है कि when that work done and displacement makes 90 degree, at that time W is 0. वैसे तो ऐसा भी कहा जाता है कि for example it's a river flow, ऐसा मान लो river stream, water stream in this direction, and if suppose a swimmer displaced in this direction, तो ऐसा माना जाता है कि स्विमर ने डिस्प्लेसमेंट तो किया but that displacement is a perpendicular to force. किसका फोर्स? तो कि जो पानी जो अपना फोर्स लगा रहा थे उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हुआ। सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन हम ऐसा कह सकते हैं कि वहां पे वर्क डन 0 हुआ। ओके, दैट इज जस्ट सिंपल एग्जांपल। तो W0 when angle between force and displacement is 90. Is that clear? Now the third point, as we just think about, when the theta value is a pi, when theta pi means 180, so in that case you can say that W is equal to FD cos pi. So W is equals to minus FD means we can say that कि यहां पे जो वर्क डन हो रहा है that is against force. Okay, displacement that is against force. मतलब क्या? So when a car apply brakes, displacement हुआ but the force in opposite direction means you can say that the displacement due to friction. तो उस टाइप के वर्क डन को हम नेगेटिव वर्क डन कह सकते हैं when there is a work done against that force. यहां पे ऐसा कह सकते हो कि displacement due to friction. तो यहां पे इस टाइप के वर्क डन को नेगेटिव है वो लिया जाता है। एंड W is equals to minus FD when
यू अप्लाई ब्रिक्स, तो जो वर्क डन हुआ उसको आप नेगेटिव वर्क डन कह सकते हो। वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, दैट्स अ नेगेटिव। आई बात समझ में? उसी को लेकर यहां पे सिंपल से पॉइंट दिए गए। अगर मान लो हम ऐसा देखें कि व्हेन अ फोर्स 3 to 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन एक्स एक्सिस इज अ 5 मीटर। एक्स एक्सिस में 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। कैलकुलेट वर्क डन। सो हियर यू हैव अ सिंपल फॉर्मूला, एफ डॉट डी। एफ का मतलब आप यहां पे ले सकते हो 3i प्लस 2j प्लस k कैप डॉट 5i कैप। अब यहां पे आपको याद होना चाहिए i डॉट i। याद ना हो तो सिंपल सी बात सोचो, डॉट प्रोडक्ट हो तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है? cos थीटा। i डॉट i मीन्स बोथ वैल्यूज फॉर x एक्सिस। So when two values in the same direction, angle between them 0 and cos 0 value is 1. So I dot I का वैल्यू मिलेगा 5 3 यहाँ पे 15 जूल, because work done unit is 15 जूल। आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो, if displacement is 5j caret or displacement is 5k caret, at that time what will be work done? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। Is that clear? So try it. Now, illustration number 2. Natwarlal's bicycle gets dragged on a road through a distance of 10 meters from before it stops. During this, a frictional force of 200 Newton acts on the bicycle in the direction opposite to its motion by the road. तो distance 10 मीटर हुआ, 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, हमें फाइंड करना है द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बाइसिकल। तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा उसकी वजह से बाइसिकल है वो रुक गया, या तो हम ऐसा कहेंगे कि वो ड्रैग हो गया। सो हियर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो हियर यू कैन से दैट द एंगल बिटवीन देम दैट इज अ पाई। सो W is equals to FD cos pi. Force is at 200 Newton. Displacement that is at 10 meter. And cos pi is a -1. So here you can say that work done is equals to minus 2000 joule. तो minus 2000 joule ये क्या बताना चाहता है? तो कि minus 2000 joule it shows that work done by the object due to friction, work done against the system. Here work done is negative, जो चाहो हम कह सकते हैं। Now what? Second point, the work done by the bicycle, work done by the bicycle on the road. अभी ये क्या है? तो क्या as per Newton's third law, action and reaction equal in magnitude, opposite in direction, ऐसा होता है। तो for the second purpose आप ऐसा second point आप ऐसा कह सकते हो, whatever that force act on the bicycle by the road, that same force act on the road by the bicycle, on the road by the bicycle, yes. पर यहां पे होगा क्या कि ड्यू टू रोड बाइसिकल ड्रैग्ड हुआ, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, बट क्या साइकिल की वजह से रोड डिस्प्लेस होगा? तो क्या आप कहोगे कैसी बात कर रहा है? ओके, सो विद द हेल्प ऑफ बाइसिकल डेफिनेटली रोड विल नॉट डिस्प्लेस। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। तो सेकंड केस में आप ऐसा कह सकते हो वर्क डन विल बी 0 जूल। तो मतलब यहां पे ये हुआ कि WAB मतलब वर्क डन टू ब्रिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम A to B, वहां पे जो वर्क होता है मतलब उसका मैग्नीट्यूड सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन हो सकता है। So here work done minus 2000 joule. Same work done means you can say that action and reaction equal in magnitude, opposite in direction. पर यहाँ पे वही बताना चाहते हैं कि अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों का वर्क डन सेम हो। आई कुछ बात समझ में? मतलब WAB is not equals to WBA, ऐसा भी हो सकता
है। आई बात समझ में? यहां पे ऐसा ही हुआ दैट वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बाइसिकल, और दूसरे में कहा वर्क डन बाय द बाइसिकल ऑन द रोड। तो वर्क डन ऑन द बाइसिकल हुआ -2000 जूल, उसकी वजह से साइकिल है वो रुका, या तो साइकिल है वो ड्रैग हुआ। बट वर्क डन बाय द बाइसिकल ऑन द रोड दैट इज ए 0 वैल्यू, 0 जूल, ताकि वहां पे रोड का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था। आई कुछ बात समझ में? चलो, नाउ इन दिस इलस्ट्रेशन a block lying on a rough horizontal surface is displaced through a distance d by force F acting an angle theta with the horizontal. If mu is the coefficient of friction between the block and the surface, find the work done. The mass of the object is m. Mass of block is m. यहां पे आपको फाइंड करना है वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला आता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो खैर डी है, पर हम यहां पे फोर्स के बारे में जरूर सोच सकते हैं। बिकॉज हियर व्हेन दिस बॉडी डिस्प्लेस्ड देयर इज अ फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ। हियर दिस actual force that will resolve in a two component f sin theta and f cos theta. So if you just think about it, कि यहां पे जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हमें यहां पे एक और चीज भी है, that is a mg in a downward direction where the normal force in upward direction. So suppose if I think about vertical forces, so suppose if I think about force in y direction, that is n plus f sin theta is equals to mg. तो यहां से पता चलेगा that normal force which is equivalent to mg minus f sin theta. Why we require to think about the normal force? Because as you are going to find out force, तो यहां पे आपको फोर्स के जो भी कंपोनेंट है उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। सपोज इफ आई थिंक अबाउट नाउ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू एस इंटू एन, या तो सिर्फ म्यू कह दो, तो म्यू इंटू mg minus f sin theta. So here it shows that is a n plus f sin theta, and small f is equals to mu sn. f sin theta is other direction, mu sn normal equals to हमने ले लिया है fg minus f sin theta. अब यहां पे क्या है, तो कि फ्रिक्शनल फोर्स in this direction where of f cos theta in opposite direction, तो हम यहां पे ऐसा कह सकते हैं. So after that small f value, that is a mu mg minus f sin theta, here we can say that the force responsible for displacement, so that is equivalent to f cos theta minus small f. So here total work done f cos theta minus small f into displacement d. But here small f value, that is a mu mg plus mu f sin theta into displacement. So total work done, I can say f common cos theta plus mu sin theta into d minus mu mg into d. This is known as total work done. Is that clear? Sure.